Welcome to IELTS Tips, Tricks and Updates. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Tip for listening. Before each section, you'll be given information about the speaker and what they'll be talking about. You won't be tested on this, but it will help you answer the question that follows by understanding the context. इट मीन्स कि ईच सेक्शन से पहले आपको जो स्पीकर होगा उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और वो किस टॉपिक के बारे में बोलने वाला है उसके बारे में भी बताया जाएगा. Tip for writing. Letter writing is always formal, even in informal letters. The tone has to be polite and the language should be grammatically and logically complete. Slangs and senseless rhetoric should be avoided. It basically means जब आप लेटर लिख रहे हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करें. अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो भी आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें. Tip for speaking. Don't use slangs. You have 11 minutes to display the best English you know. In all the years that you have been learning English, choose to be formal rather than informal. इसका मतलब है कि आपको फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी है 11 मिनट्स तक. जब तक आप इंग्लिश बोल रहे हैं तब तक फॉर्मल लैंग्वेज में बात करिए एज कंपेयर टू इनफॉर्मल लैंग्वेज. Tip for reading. Do many practice tests to familiarize yourself with the test format, the type of questions, the level of difficulty and more. It basically says कि आप ज़्यादा से ज़्यादा question papers solve करिए ताकि आप basic test format से familiar हो जाएं. This is the end of this session. Don't forget to like, share or subscribe.